Hello everyone, welcome to PTE Reading and Writing Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 26th video in this series. It means that we have already discussed 25 highly repetitive real exam questions जो आपके real paper में आए हैं, and we discussed the strategies, the tips and tricks to solve those reading and writing filling the blanks. First things first, now you know that PTE is accepted in UK, so if you want to go to UK to study, you can achieve your dream through PTE. And PTE is accepted now in 90% of Canadian universities, so you can reach Canada through PTE also. And a new test, which is PTE Home, has been started. अगर आप spouse visa या family visa UK में apply कर रहे हैं, you can achieve that through PTE Home. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now question students ask is this, क्या sir हम भी कर सकते हैं? The answer is big yes. अगर आप same tips और strategies follow करोगे listening के लिए, speaking के लिए and writing के लिए, you will be able to score. And for reading, we discuss things like in this video series so that you can achieve your target score. I want you guys to achieve your target score in first attempt. I do not want कि आप paper पे thousands of rupees, lakhs of rupees waste करिए. Do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. PTE Reading Integrated section है, so that's why you have to manage your time yourself. But you get 32 to 41 minutes and it has 5 question types. And the first question type is the most important one, which is reading and writing. Filling the blanks. Why I'm saying it's most important, so अगर आपको अब scoring पता है, you would know already कि reading में 22 marks जाते हैं, reading and writing filling the blanks से, and writing में भी आपके RWFIBs contribute 22 marks. So that's why those are most important ones. And RWFIB strategy, the strategy which you need to adopt is this: you need to make sure that you are solving your RWFIB within 3 minutes. अब 3 minutes में क्या आप सब words पढ़ के समझ सकते हो, solve कर सकते हो? The answer is no. So that's why this is the wrong strategy, or the right strategy is to do the skimming. And you should know how to do the skimming. We teach our students, चाहे वो institute based हो या फिर online students हो, how to do the skimming. And this is today's blank. As usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this, and after that we will discuss it. Okay, so let's get started. You know that हम पहली बार में skim करते हैं to understand the gist, कि gist क्या है, किस बारे में है जो आपका RWFIB है. After that we understand the tenses, कौन से tense use हो रहे हैं, past tense use हो रहा है, present use हो रहा है या future use हो रहा है. Along with that we look for tone, because tone is important. Positive tone है, negative tone है, neutral tone है, उसी के basis पे आपके blanks बहुत बार solve होते हैं. So let's get started. Zika is more pernicious. This is not pernicious, this is pernicious. Pronunciation, R key pronunciation is very important, and we have a dedicated pronunciation lectures because pronunciation is score 10 to 90, and pronunciation के basis पे ही आपके reading and listening के marks भी आते हैं speaking से. So that's why you have to make sure that you are pronouncing the words correctly. So Zika is more pernicious than public health officials anticipated. I'm going to highlight the tough words so that we can discuss it later. And I'm now starting the skimming now. At present is circulating in more than 50 countries. Mid-May, 7 countries reported microcephaly, other birth defects related to virus, which is by mosquito bite. Mosquito bite, blood transfusion, or sexual contact. It can be passed from mother to fetus. Despite age over 70 years, little genetic difference for the strain currently in Americas and other previously detected are practically something from each other. If the virus has changed so little over time, why it is rearing its ugly head now, scientists are not sure, but experimental work suggests that
virus was capable of detrimental health effects and outbreaks all along. Therefore, it is unlikely mutations enabled new abilities. Instead, public health officials probably didn't understand Zika's potential because the virus mostly in remote locations. Okay. So more or less, you have seen this, you have gone through this, कि it is going to talk about Zika virus, कि पहले Zika virus रिमोट लोकेशंस में था, अब काफ़ी जगह आ गया है, कोई म्यूटेशंस इतनी नहीं हुई है, सो रिसर्च हुई है, थोड़ी सी पता चला है कि ऑल अलोंग ही इतना डेडली या पावरफुल. सो पेनिशियस इज विच इज़ समथिंग वेरी हार्मफुल, स्लो इफेक्ट होता है, नोटिसेबल इफेक्ट नहीं होता है. एंटिसिपेट मतलब जितना सोचा उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग वे में. माइक्रोसेफेली इज you can say genetic disorder where the newborns are born with a small head and strain. I think अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, पोस्ट कोविड हम सबको पता है स्ट्रेन वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ वायरसेस. एंड देन detrimental means बहुत ज़्यादा dangerous health effects. So okay, so now what we have done, we have improved our vocab, we have learned new words. You can note down these words in a separate copy so that आप अपने essays में यूज कर सकें. इनकी pronunciation ध्यान रखिए and do attend our pronunciation course if you want to achieve your targets course, especially if you are looking for 79 plus. So now let's see the blanks. So blanks कैसे solve करते हैं. We read 5-6 words before the blank and 5-6 words after the blank. Okay, so other serious birth effects linked to virus, which is something linked, fused, picked, transmitted. सारे ईडीज में एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ग्रामर वाला रूल नहीं लगेगा. नाउ वी हैव टू सी सम कंटेक्स्ट बेस्ड वोकैब एंड लेट्स सी. अब वायरस है, अब कोरोना के बाद तो सबको ही पता है कि वायरस क्या होता है. वायरस ट्रांसमिट होता है, राइट. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वायरस अपने आप को ट्रांसमिट करता है. सो यू नो दिस टर्मिनोलॉजी. प्री कोविड टाइम्स थोड़ा टफ होता था क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता था कि सर ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, हमें बायोलॉजी इतनी नहीं पता, इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाता. बट अब तो ये कॉमन टर्म्स हो गए हैं, स्ट्रेन्स, ट्रांसमिशन, राइट. तो जब हम कहते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था कोरोना वायरस का, तो मतलब वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में transfer हो रहा था. That is known as transmitted. So that's why I'm going to simply select it. But rest of things doesn't make sense contextually. Link थोड़ी होगा mosquito bite से. इसकी pronunciation is not mosquito, it's mosquito. Okay? तो mosquito bite से link थोड़ी होगा या join थोड़ी होगा. Link और fuse तो almost similar meanings हैं, right? Fuse क्या होता है आपस में जोड़ना, link क्या होता है जोड़ना. वी हैव अ रूल, अगर दो सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं तो हम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड वी यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टू सॉल्व आवर ब्लैंक्स. तो आपने लिंक भी एलिमिनेट कर दिया एंड फ्यूज भी एलिमिनेट कर दिया. सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ पिक डॉट ट्रांसमिशन. मस्किटो बाइट से कुछ पिक थोड़ी होगा, वो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ब्लैंक. डिस्पाइट आपका एक साइन पोस्ट वर्ड है, पार्ट ऑफ आवर ग्रामर सीरीज. डिस्पाइट का मतलब कंट्रास्ट होता है, राइट, कि हम कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं. डिस्पाइट जीकाज समथिंग रेंज over almost 70 years there is little genetic difference among various strains. तो अब इसी के बेसिस पे फॉरवर्ड रीडिंग और कंट्रास्ट के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट समथिंग बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट. अब आप ये कह रहे हो कि रेंज ओवर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स से वो ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में, बट बहुत कम जेनेटिक डिफरेंस है. यहाँ पे हिंट इज विद लिटल. इफ़ यू हैव अटेंडेड अ ग्रामर कोर्स यू नो दैट. अब स्टूडेंट्स क्यों मिस्टेक करते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करने के लिए, क्योंकि उनको अ लिटल और लिटल में डिफरेंस नहीं पता है. एंड वी कवर दीज लिटल थिंग्स ऑल्सो इन आर कोर्स. अब लिटल का मतलब होता है जीरो के बराबर और अ लिटल का मतलब होता है कुछ फ्यू. जो आप फ्यू कहना चाहते हो वो आप अ लिटल से रिप्रेजेंट करते हो, ना कि आप लिटल से रिप्रेजेंट करते हो. ओके, सो इसीलिए अब लिटिल का मतलब है ना के बराबर जीरो. अगर जेनेटिक डिफरेंस दोनों वायरसेस का ना के बराबर है, मेकअप उनका जो ना के बराबर है, तो रेंज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि डिफरेंस जीरो के बराबर है. सो नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड्स विच वी हैव. यहाँ पे आपको टोन की स्ट्रैटेजी समझ आएगी. आवर टोन इज गोइंग टू बी कंट्रास्टिंग. सो सम तो एक सिमिलर वर्ड हो गया, सिनोनिम हो गया लिटिल के लिए. सो कैन वी यूज इट? द आंसर इज
No. Vast. Yes, it makes sense. Let's keep it. And what we are doing is we are doing a process of elimination, which I say it as best friend forever, क्योंकि हम अपने negative options को eliminate करते हैं and positive options जो रह जाते हैं उनको choose करते हैं. अब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है लिटिल से राइट. लिमिटेड. लिमिटेड भी आपकी सम की सिनोनिम है. तो जहां पे आप लिमिटेड की बात कर रहे हो क्या वो लिमिटेड हो सकता है? द आंसर इज नो. सी इफ यू नो आवर स्ट्रैटेजीज ग्रामर रूल्स इट्स सो इजी टू फाइंड दैट द आंसर इज गोइंग टू बी वास्ट एंड वैसे भी वो कंटेक्चुअली फिट हो रहा है. So we are going to select the option as vast despite Zika's vast range. Okay, right? So now let's see the next blank. Now you know that how we solve the other blanks is this, that we read 4-5 words prior to the blank and 4-5 words after the blank. So another previously detected in French Polynesia are practically something from each other. Okay. अब आप ये कह रहे हो जो स्ट्रेन है अमेरिका में और जो अमेरिका काफ़ी दूर है, फ्रेंच पॉलिनेशिया बहुत दूर है, और हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि ना के बराबर जेनेटिक डिफरेंस है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी विच इज़ गोइंग टू फिट कंटेक्चुअली. अब अगर किसी में ना के बराबर डिफरेंस है तो क्या वो रिलेटेड होंगे? द आंसर इज यू मे से दैट यस हो सकते हैं वो रिलेट, तभी तो ना के बराबर हैं, बट वो सिमिलर होते हैं राइट. अगर आपके दो चीज़ें, हम रिलेट क्या कहते हैं, क्या मैं उससे अपने आप को रिलेट करता हूँ राइट. जैसे अब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं तो आप इसका मतलब ये है कि कुछ सिमिलैरिटी एक्सपेक्ट करते हो, या फिर आप कहते हो कि आप कुछ सिमिलर हो, बहुत ज़्यादा सिमिलर. या ये नहीं कहते कि वो तो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, रिलेट नहीं होता है राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट एंड यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया. यहाँ पे तो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम तो कॉम्प्लिकेशंस की, मुश्किलों की बात ही नहीं कर रहे. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस आल्सो. अब इनडिस्टिंग्विशेबल विच मीन्स कि हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. डिस्टिंग्विश का सिनोनिम क्या है? डिफरेंस. तो यहाँ पे आपको पता है फ्रॉम योर बैकवर्ड रीडिंग, आप बता रहे हो कि इसमें लिटिल जेनेटिक डिफरेंस है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कोरिलेट एंड द आंसर इज गोइंग टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल. ओके, कि ना के बराबर जेनेटिक डिफरेंसेस हैं. Now let's see the fourth one also, characterization. Characterization क्या होता है कि when the way in which somebody or something is described, जब आप किसी को describe कर रहे हो, यहाँ पे हम description की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. So that's why the answer is going to be indistinguishable. Okay, right? So I hope this is clear to you. Now moving on to the next blank. You know that we are going to read 4-5 words before the blank and 4-5 words after the blank. Okay. Mosquitoes suggest that the virus was capable of detrimenting health effect. अब detrimental क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है, आपको मैंने बताया डेंजरस है, तो उसकी कॉनोटेशन क्या है, और एसोसिएशन या फिर जिसको हम टोन कहते हैं वो क्या है? नेगेटिव है. तो आपको यहाँ पे कोई वर्ड चूज करना है. सारे आईएनजीज हैं तो इसलिए आप और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर रूल नहीं अप्लाई कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कंटेक्स्ट. अब नेगेटिव कंटेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? फेवर. फेवर तो हम पॉजिटिव वे में कहते हैं कि उसने उस चीज का फेवर किया राइट. प्रॉमिसिंग. प्रॉमिसिंग भी आपका पॉजिटिव कंटेक्स्ट है, पॉजिटिव एसोसिएशन है. सपोर्टिंग अगेन पॉजिटिव, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो पॉजिटिविटी कॉनोटेट होती है. सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन ब्लैंक विच इज कॉजिंग, और ये सेंस भी बनाता है कि हेल्थ इफेक्ट्स, डेंजरस हेल्थ इफेक्ट्स कॉज होते हैं. लाइक वायरस हमेशा से ही कैपेबल था डेंजरस साइड इफेक्ट्स को कॉज करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट ब्लैंक. Public health officials probably didn't understand Zika's potential before the virus, mostly in remote areas until recently. Ab, until again a signposting word, part of our grammar series. Until recently का means अभी तक, means आपको पता है कुछ contrasting बात हो गई. Okay, so अब इसमें सारे EDs या past form हैं तो again we have to use our context. but अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ये RWFIB, तो ये आपकी backward reading से बहुत easily solve हो सकता है. अब हमने यहाँ पे वर्ड्स हैं लाइक्ड, ब्रॉट, प्रेफर्ड और सर्कुलेटेड, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? एट प्रेजेंट इट इज सर्कुलेटिंग इन मोर देन 50 कंट्रीज.
So the right answer is going to be circulated. But let's see the other options also, so that if you're not able to spot out this thing, you should have a backup plan. तो वायरस लाइक कर रहा था कि रिमोट एरियाज में होने के लिए वायरस की कोई प्रेफरेंस हो सकती है, उसको तो हम एक तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो इसलिए उसकी प्रेफरेंस नहीं हो सकती. ब्रॉट, वायरस ब्रॉट मोस्टली, वॉज ब्रॉट हो सकता है, वायरस कहीं से लाया गया, अपने आप को वायरस खुद ला रहा है. एज आई सेड, ये सब चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप किसी चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हो. वायरस तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है. अब आप ये कह सकते हो कि सर प्रेफर्ड भी तो हो सकता था, बिकॉज इट हैज पोटेंशियल, बिकॉज द वायरस प्रेफर्ड मोस्टली इन कंटेक्स्ट, ग्रामेटिकल नहीं सेंस बनाता. अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना, प्रेफर्ड रिमोट लोकेशंस मोर इजीली, ग्रामेटिकली सेंस बनाता, बट प्रेफर्ड मोस्टली इन नहीं सेंस बनाता. So that's why we are going to eliminate this and we are going to select the circulated as our option. And let's see if all the blanks are correct. Yes, all the answers are correct. So you saw with our strategies, which are based on context, lexical resource, and grammar, you can easily solve your reading and writing, filling the blanks. And in context, skimming is very important, like you have seen. Then forward reading, backward reading. Today we could solve our answer circulation wala through backward reading. And tone से आज हमने दो blanks को fill किया कि कहाँ कहाँ negative tone use होगी. Along with that, collocations are very important, and phrasal verbs too. Vocab is something which you build with time, slowly and steadily. And that's why we study new words. I tell you the new words so that you can improve your vocab. Now we provide a complete grammar course to our students where we discuss parts of speech, subject-verb agreement, prepositions, models, articles, determiners, signposting words. Today you know that two blanks हम signposting words के basis पे solve कर पाए. Tenses, irregular verbs or plurals, British English rules, and sentence structure formation. And all this is going to help you in reading as well as writing and listening. And you have 2.5 to 3 minutes to solve your reading blanks. In first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content. And then in next 190 to 120 seconds, you have to look for clues, find pointers, and use your process of elimination, because it's your best friend forever. Now, all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below, as you can see students who have achieved their target scores. And this is some of our latest success stories where students have scored a perfect 90 also. This is our WhatsApp number 8699121121. You can WhatsApp us if you have any questions, doubts or queries, or you want to take in the institute or online coaching. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.